Hello, hi, and good evening, everyone. This is my Maneja back with a series of 3 words every day for next 3 weeks, and we are here today with some fancy adjectives. All right, so let's start. So the first fancy adjective I've got for you is the word demure. The spelling and the pronunciation vary a little bit. The spelling is Demure, but it is pronounced as demure. Okay, the word means a person who's very shy, who's very reserved, एकदम modest type जो people होते हैं, like the opposite of outgoing. All right, तो आप इसको याद कैसे करोगे? तो टेक द वर्ड मूव फ्रॉम हियर. तो जो बहुत ही शाय होते हैं, जो बहुत ही रिजर्व्ड होते हैं, उनका मुंह खुलता ही नहीं है कभी. दे आर ऑलवेज या तो बहुत धीरे धीरे बोल रहे होंगे जो हमें सुनाई नहीं देगा, या उनका मुंह खुलता ही नहीं है. दे डोंट स्पीक, दे डोंट टॉक मोर मच. ऑलराइट, सो ऐसे हम याद कर सकते हैं. एंड द सेंटेंस फॉर इट कैन बी लाइक ही इज क्वाइट डेम्यू फॉर दिस प्रोफेशन. आई डोंट थिंक ही इज द एप्ट पर्सन. लाइक वो बहुत शाय है, तो आई डोंट थिंक इस जॉब में उसको एप्ट रहेगा. Alright. The second fancy adjective for not so good word is loud. Loud basically adjective है बहुत ही जो angry, rude people होते हैं ना उनके लिए. हिंदी जिनको हम बोलते हैं खड़ूस. Alright. Like for example, my roommate argues with everyone. He is a loud. Or you can say he's a loud person who argues with everyone. ओके अब इसको याद कैसे करेंगे? जो भी खड़ूस लोग होते हैं, जो हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, वो बहुत लाउड होते हैं, राइट? तो लाउड से लाउड. ऑलराइट, इजी टू रिमेंबर. यस. ओके, द थर्ड एंड द फाइनल एडजेक्टिव फॉर टुडे इज प्रिस्टीन. प्रिस्टीन बेसिकली मतलब होता है एकदम क्लीन, स्पॉटलेस, एकदम फ्रेश एज न्यू कर देना एकदम. ओके, तो a sentence with it like I can never keep my room as pristine as my mother does. Really, trust me, guys. Okay, so these were the 3 fancy adjectives for you today. Hope you liked it. Please share and comment if you have any suggestions for me. Thank you.